जब उसका एक पात्र भवानंद वंदे मातरम गाता है तो दूसरे पात्र महेंद्र पूछते हैं माता कौन है। भवानंद उसे जवाब देते हैं हम और किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी मां नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हमारे लिए सिर्फ वही सूजला और सुफला है। अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी भावना का चित्रण करने वाला कवि और लेखक क्या वह कम्युनल हो सकता था? अब समय आ गया है कि वंदे मातरम और उसके इतिहास का अनबायस्ड इवैल्यूएशन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आ गया है समय। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के 2 पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है। पहला पद जिसे हटाया गया उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है, हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमी मां शक्ति, बाहुते तुमी मां शक्ति, हृदय तुमी मां भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है। इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय, All right, so that was Raksha Mantri Rajnath Singh contributing to the debate, the special debate on Vande Mataram. Who initiated the debate in Lok Sabha? It was Prime Minister Narendra Modi. Let's break down the details of what the Prime Minister said. The national song triggered a firestorm in Parliament today. Prime Minister Narendra Modi opened a special debate on the 150th anniversary of Vande Mataram in the Lok Sabha. In a fiery address, he tore into the Congress party, accusing it of doing tukre tukre of the national song, removing key stanzas and pandering to communal pressure. He linked Jawaharlal Nehru to Muhammad Ali Jinnah's opposition to the song, calling it a historical betrayal. So let's break down the details of the exact statement of Prime Minister Narendra Modi. These are the attacks that came in during that fiery address of Prime Minister. Attack number 1, Jinnah opposed Vande Mataram. Attack number 2, Nehru agreed with Jinnah's objections. Attack number 3, Congress surrendered before the Muslim League. Attack number 4, Congress did tukde of Vande Mataram, and eventually also said division of the nation. Attack number 5, Congress's appeasement crushed the national pride. Listen in. वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से
15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। Congress MP Priyanka Gandhi sharply retorted to Prime Minister and the BJP, saying that Vande Mataram debate in Parliament was merely an attempt to deflect attention ahead of upcoming Bengal elections. She added that while the Prime Minister delivers good speeches, they often lack facts, and accused the BJP of repeatedly dwelling on the past instead of addressing the present. Let's take a look at what Priyanka Gandhi said. These were the comments that came in. Statement number one, Vande Mataram debate is a bid to deflect. She asked, why are we doing this debate? Number two, PM gives good speeches but lacks facts. So she was criticizing the Prime Minister. Number three, BJP only talks about the past. Statement number four, BJP has no vision for the future. Statement number five, she says, I am an MP, I am not an artist, and that's why I'm going to just table the facts. So this is what Priyanka Gandhi Vadra said. Let's listen into that excerpt as well. आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। और आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, कब से शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। आपने बहस मांगी है, आपने बहस मांगी है। आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है। So there's not just, a special debate happening inside the parliament, but outside as well. Statements not just being made inside, but outside as well. Listen to what Congress leader Hussain Dalwai said that has added to the political debate. ऐसा है, वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत नहीं है। राष्ट्रगीत हमारा जन गण मन अधिनायक ये है। और ये बंकिम चंद्र जी ने जो लिखा है वंदे मातरम, उनके एक नॉवेल में, उसमें 4 स्टैंजाज हैं। उसमें पहला जो स्टैंजा है उसको ही राष्ट्रगान करके
मान्यता मिली है। आरएसएस के शाखाओं के ऊपर वो पूरा बोलते हैं, जिसमें कहाँ न कहाँ हिंदुओं को, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने की बहुत सारी बातें हैं। इसलिए वो टालने के लिए नेहरू जी ने बहुत अच्छा किया। आज भी वंदे मातरम मुसलमान बोलते हैं। Now, the debate in Parliament is part of the year-long celebrations on the 150th anniversary of Vande Mataram, a poem written by Bankim Chandra Chattopadhyay. And during this speech in Parliament, Prime Minister Modi stated that Bankim Chandra, or Bankim Da as he called him, wrote the national song at a time when it had become fashionable to look down upon India. Listen in to great-grandson of Bankim Chandra. And we are currently being joined by the great grandson of Bankim Chandra Chattopadhyay, Mr. Sajal Chattopadhyay. Sir, thank you so much for speaking to Times Now. पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की संसद से वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, उनकी तारीफ करी और बताया कि किस तरह से देश की आजादी के आंदोलन में उनका जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, ये तो मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज उन्होंने जो कर रहे हैं, ये तो कोई बोलने का भाषा नहीं है। एक्चुअली हम तो आभारी हुई, पूरा भारत बस इसके लिए गर्वित होगा। सर, बट जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस वंदे मातरम के टॉपिक के अराउंड भी जो पॉलिटिसाइजेशन होता है, जो राजनीतिकरण होता है, चाहे वो टीएमसी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी का भी ये कहना है कि जब ये गीत लिखा गया था तो उसके कुछ स्टैंजास थे जो कांग्रेस ने उस टाइम हटा दिए गए थे, कि आरोप भी लगाया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? बीजेपी जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कुछ इसमें कुछ स्टैंजा है जिसमें जो हिंदू देव देवी है उनका नाम लिखा हुआ है। All right, let's open up the debate. Who's politicizing? Let's go across to our guests. We have Charu Pragya, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Shubhankar Bhattacharya, political analyst, and we have Dr. Akashdeep Muni, also political analyst. Good evening to all of you. Charu, I want to come to you first. The opposition says, and Priyanka Gandhi in the parliament today said, there are just two reasons why we are debating this issue. One, because the BJP is eyeing West Bengal polls, and two, because it likes to live in the past. How do you respond? Good evening. Vande Mataram. I think the opposition does not understand the importance of Indian civilization, and that is why they bring up this question. We are celebrating 150 years of Vande Mataram, and it has nothing to do with elections. India has elections in several states every single year. So if you start linking everything to elections, then it doesn't make sense. You're clutching at straws, which Congress always does. Vande Mataram is not a song. It is the soul of Bharat. And it is the tune which awakened an entire country to their freedom struggle. Hamari Azadi ka pehla nara hi Vande Mataram tha. And that nara, that Vande Mataram was cut short. Not by foreigners, not by our oppressors, but by our very own leaders, by Indian leaders. And that is the problem. Awakening civilizational history today so that the youngsters of this country know what went on is extremely important. If at 150 years also we cannot give it the respect it deserves, then we are not the sons and daughters of Bharat the way we should have been. See, the Congress says that they uphold Vande Mataram. The Congress today says what is the need to discuss it, क्योंकि भाई राष्ट्रगीत तो है ही, लेकिन मुझे बताइए, if you uphold it, then why do your leaders refuse to sing it? Okay. If you uphold it, then why do your alliance partners call it religious? It is not religious, because let's remember that when Vande Mataram was introduced, Congress then was being led by a Muslim person. Okay, but Charu, very quickly, the latest that is coming is coming in from a Congress leader, Hussain Dalwai, who says there were and the stanzas that were removed. He's talking about those stanzas, saying इसमें ऐसी बातें थी जो Muslim community को hurt कर रही थी, and that's the reason why Jawaharlal Nehru took a stand for that. नहीं कर रही थी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ. Can I please finish? Yes. Swati, can I? Yes. देखिए, जब पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस की एक मीटिंग में कोलकाता में गाया गया था, this was in 1896. The president of the Congress was a Muslim man, a nationalist Muslim, Rahimtullah Sayani ji. उसके बाद भी Congress continued to sing the song, not linking it to religion.
religion, only linking it to nationalism, to patriotism, to their struggle to free Mother India. जब Maulana Azad was the president of Congress, फिर भी कोई problem नहीं थी. Are these people not Muslims? Are these people not nationalists? Could they not see what the song was all about? They did. The song is only about the glory of Mother India and working for Mother India. And ये इनको problem हो गई. ठीक है. चारू, so let me take a response now. आप कह रही हैं इनको problem हो गई. Let me bring in Dr. Muni. Dr. Muni, till there was no fear of vote bank or till there was no fear of losing power, nobody had a problem with the stanzas that were removed. And this is the allegation that Jawaharlal Nehru, back then the government there, was scared of losing power. And to appease Muslim League, they decided and agreed to the division of Vande Mataram. चलो ठीक है स्वाति जी, those today talking about Deshbhakti. Remember, RSS and Sangh Parivar supported the British against Indians in the national movement, did not take part in the Quit India movement, did not raise the national flag for 52 years, abused the Constitution of India, burnt effigies of Bapu and Baba Saheb Ambedkar, and in the words of Sardar Patel, were involved in Gandhiji's assassination. Now regarding Vande Mataram, in committee deliberations, Netaji Bose recommended adopting the first two stanzas as recorded in the Congress records during the 1939 Haripura Congress. He said, Vande Mataram, I'm quoting him, Vande Mataram has been the war cry of our fighters. Let it continue to inspire us. Are you accusing Netaji Bose of appeasement of Muslims? How shameful this is. Even Gurudev Tagore, Rabindranath Tagore endorsed it. Are we saying that Gurudev Tagore was appeasing Muslims? किस निचले हद तक हम आ चुके हैं कि ना कि हम आज नेताजी बोस और गुरुदेव टैगोर को नहीं prove it. I'm challenging you. Prove the quotation wrong. Okay. Vande Mataram has been the war cry of our fighters. This is said in Haripura. No, that is not. But she's not opposing to that. She's not opposing to that. She's opposing to the other things that you've stated. Charu, before you come in, very quickly, I want to go across Shubhankar Bhattacharya as well. Shubhankar Bhattacharya, that allegation of politicizing or that allegation of fearing losing the vote bank is being leveled against the TMC as well. See, the problem is that when we talk about other cultures, we actually do a very shallow research of it, and that is the basic problem. You have just one, agenda of maligning the Bengal and its history with half-known things. The problem is when you read Anand Math, you are quoting. I heard Rajnath Singh quoting a lot of things, quoting Mahendra and Kalyani's role and everything. But what he missed over there, what I think was missed, that entire story was on the backdrop of Sannyasi movement. Now, Sannyasi movement was a huge thing. And we should actually study about Sannyasi movement as well. Sannyasi movement in itself was joined up by a lot of, at that time, the farmers, and then because the Bengal was already facing a drought-like situation, and in fact, the land was taken away by the Britishers, and that happened in 1770. But Shubhankar Bhattacharya, 1772, you had a lot of. See, just one little point. If you see, I don't want to make this a debate which should not have any facts in it. Let us talk about the facts rather than just going on yelling about and pointing fingers at each other. Let us understand that Sannyasi movement even had inclusions of the Muslim leaders over there as well. That is what I'm trying to come up. Because the farmers over there were not only Hindus, they were Muslims as well. Okay, I want to quickly go across to Charu Pragya. She said the same thing. She said the same thing. She said the same thing that she said the same thing that there were a lot of leaders part of the Congress who belonged to the community who had absolutely no problem with the original Vande Mataram. Tell me one thing. Charu Pragya. Tell me one thing. Why didn't Shyama Can I come in? Yes, and let me take you through history again. Can I please speak? Okay, I have to wrap up. Let Charu come in. You've leveled allegations. Allow her to finish. Yes. So Swati, on the 1st of September 1937, Nehru actually wrote a letter
to Subhash Chandra Bose saying there is a problem in this song because it can irritate the sentiments of Muslims. Okay. There was absolutely no irritation for the last 50 years. Even under Muslim leadership of the Congress. When did this so-called irritation start? When appeasement started. When Jinnah and Nehru actually only saw Muslims in this country as a means to seizing power. They were not interested in welfare of the people. They were only interested in division, whether it is division of Vande Mataram or division of the country, because they both simply wanted to seize power at the cost of appeasement, at the cost of division. And that is what needs to be reminded to the people of India. You know, both sides are leveling allegations of politicizing the issue and catering to a particular vote bank against each other. Who's politicizing, who's playing vote bank politics? We'll find out, and this is going to play out till the West Bengal elections are over. Charupagya and gentlemen, thank you very much. Thank you, Mr. Bhattacharya. Can't give you more time. I'm wrapping up the show. Thank you for joining us on the broadcast.